Hi friends, welcome back to CivTech Simplified. This is Engineer Imran Aziz. Irrigation Engineering Multiple Choice Question Series Part 7 में आज हम डिस्कस करेंगे further 10 MCQs starting from question number 61 to 70. I hope previous videos से आपने learning develop की होगी irrigation engineering के basic concepts और उनसे related MCQs के बारे में. ये irrigation series और इससे पहले civil engineering की MCQ series उन engineers के लिए तैयार की गई हैं जो कि GAT एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं या SSC JE एग्जाम, FPSC, KPPSC या किसी भी जॉब इंटरव्यू या टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं. सो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इनको मुकम्मल देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रिपरेशन बेहतर हो सके. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर आगे बढ़ेंगे और आपके साथ ये क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे. मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि CivTech Simplified को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके. इरिगेशन इंजीनियरिंग पार्ट 7 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 to 70 and question number 61 says that the fall of moisture from atmosphere to the earth's surface in any form is called option A evaporation, option B transpiration, option C precipitation, option D none of these. So precipitation is the करेक्ट आंसर. एवेपोरेशन तो मॉइस्चर का ऊपर जाना, हीट के जरिए निकल जाना, और ट्रांसपायरेशन भी इसी तरह का प्लांट्स वगैरह के थ्रू जाना. सो प्रेसिपिटेशन बारिश को भी कहा जाता है. ड्यू ड्रॉप्स वगैरह जब गिरते हैं या किसी भी फॉर्म में आपका मॉइस्चर जब एटमॉस्फेयर से जमीन की सरफेस के ऊपर आता है, so that is called precipitation. 62 liquid precipitation consists of ऑप्शन ए स्नो, हेल, स्लीट एंड रेनफॉल. लिक्विड जो है इनमें रेनफॉल है, स्नो, हील और स्लीट जो है वो लिक्विड फॉर्म्स नहीं है बल्कि सॉलिड एंड गैस फॉर्म्स है. 63 द हाइड्रोलॉजी साइकिल is expressed by the equation option A P is equal to E minus R, option B P is equal to E plus R, option C P is equal to E multiplied by R, option D P is equal to E divided by R, where P is the precipitation, E is evaporation and R is runoff. So hydrology cycle में precipitation जो है is equal to evaporation plus runoff. दोनों पानी या दोनों किस्म के मॉइस्चर्स के साथ जब आप कंबाइन करते हैं evaporation और surface runoff को, तो that is called precipitation. So B is the correct answer for this question. Cyclonic precipitation results from option A lifting of air masses converging into low pressure area, option B natural rising of warmer lighter air in colder and denser surroundings, option C lifting of warm moisture laden air masses due to topographic barriers, option D all of these. So A is the correct option. Cyclonic precipitation results from lifting of air masses converging into low pressure. Question number 65. Precipitation caused by natural rising of warmer lighter air in colder and denser surrounding is called option A convective precipitation, option B orographic precipitation, option C cyclonic precipitation, option D none of these. So A is the correct option, convective precipitation. 66. The precipitation caused by lifting of warm moisture laden air masses due to topographic barrier is called option A convective precipitation, option B orographic precipitation, option C cyclonic precipitation, and option D none of these. So B here is the correct option, orographic precipitation. 67. The process of losing water from the leaves of plants is termed as option A surface evaporation, option B water surface evaporation, option C transpiration, option D precipitation. So C is the correct option. जो आपका moisture leaves या plants की surface से बाहर जाता है, so that's called transpiration. 68. The movement of water through the soil surface into the soil is called infiltration. A is the correct option, B is incorrect. A is the correct answer for this question. The movement of water through the soil surface into the soil is called infiltration. 69. The maximum rainfall during a short period measured in mm per hour is called mean annual rainfall. Option A agree, option B is disagree. So of course it's disagree because mean जो है वो average annual rainfall होता है, तो यहाँ पे कहा गया है maximum rainfall. B is disagree. 70. The amount of precipitation is measured by option A rain gauge, option B osmoscope, option C turbidity meter, option D all of these. So rain gauge is the correct option. Precipitation या बारिश को rain gauge से measure किया जाता है.
So friends, this was part 7 of our ongoing video series on irrigation engineering multiple choice questions, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 61 to 70 आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। हमारे इस चैनल के ऊपर पाकिस्तान पब्लिक रिक्रूटमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स के रिलेटेड भी टॉपिक बाय टॉपिक और रूल बाय रूल वीडियोस शॉर्ट फॉर्म में और लॉन्गर फॉर्म में अवेलेबल हैं। सो उन वीडियोस को भी देखें और अपनी पब्लिक प्रोक्योरमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। हमारी एक शॉर्ट वीडियोस की ऑनगोइंग सीरीज है खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स के बारे में। तो उन रूल्स के बारे में भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर एमसीक्यूज आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।